करूँगी ना। आप मैम को बता दो ना। ये ऑफ है। इसे प्रेस कर रखेंगे, ऑफ हो गया बस, ठीक है। चलो इसे प्रेस करेंगे, ये ऑन हो गया, राइट। मैं खड़ा हूँ ना, मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। करेंटली इट्स ऑफ। आप उधर से ऑन रखिए, ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका ये कनेक्टर खराब है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
Ladies and gentlemen, namaste and a very good evening. On behalf of Plastindia Foundation, I, Sarika Baheti, belonging to the plastic fraternity for more than 30 years, extend a warm welcome to all the dignitaries with us and the guests who've joined us at this much-awaited launch event of Plastindia. So a warm welcome to all the dignitaries. I request all the guests to please be seated and with their phones on silent mode. In the meanwhile, I'd like to talk about the journey of Plastindia Foundation. Plastindia Foundation was founded in 1987. Its journey began with its first exhibition in 1990 at Pragati Maidan in New Delhi. Plastindia is looked up to as the largest exhibition in the world organized by any association. No wonder Plastindia Foundation won the award for being the best B2B exhibition organizer in India. With its latent strength, the plastic industry has made a significant contribution in the growth of various sectors like packaging, automotive, defense, aerospace, healthcare and medical equipments, agriculture and horticulture, food security, construction, medical equipments, sanitation, drinking water, sports, solar and renewable energy, and 3D printing. The plastic industry continues to break its newest spheres, enabling India to churn out world-class products. And now, with its comeback to New Delhi, Plastindia 2023 will showcase a global experience. The credit for such a remarkable history of Plastindia goes to the powerful teams of Plastindia Foundation and your trust and support. Stronger together, we will continue contributing to our country's dynamic economic growth. So now here for you is the Plastindia 23 film. Thank you. Thank you, Sarika. Namaskar. Honorable Union Minister, Dr. Mansukh Mandaviya ji, a pleasing personality and a very accomplished man at a very young age, the youngest legislator, youngest General Secretary, one of the youngest parliamentarian and a minister in this cabinet. Sir, you're surely an inspiration to the Indian youth. Welcome, sir. Our dynamic Minister of State, Sri Bhagwant Kubaji, Madam Secretary, a promising officer, and a multi-talented lady, Aarti Ahuja ji, Mr. Bimal Kumar Dubey from ITPO, our special guests for the evening, Prabhudas ji from HMEL, Rajkumar Lohia from Lohia Corp, Anil Goel ji from Shabur ji Polanji. Sir, all your presence and support is very valuable to us. Plastindia family, the entire plastic fraternity, both in the room and all of you all who are watching us all over, members of the media, ladies and gentlemen, a very, very warm welcome to all of you for this evening. Setting aside 2 years of the pandemic and entering into a safe and more confident world, we are all gathered here for the launch of Plastindia 2003 in this Azadi Ki Amrit Mahotsav year. As you all know, plastic has become a very integral part of our lives. The pen you write, the car you drive, the mask you wear, the bottle of water you reach for, the apron a doctor wears, a school bag a little child carries. Right from farmland to space station, plastics have become the indispensable product because of its versatile application. Being the largest MSME sector, Plastindia
aims at holding a world-class exhibition and to make India the largest sourcing destination of plastics to the world. We create a platform where more than 2,000 exhibitors exhibit the different avatars of plastics. We also provide opportunities for this magical material for all the people who come there. In fact, sir, it's like a Kumbh Mela of plastic industry. But the only difference of this Kumbh Mela is, या भाई बिछड़ते नहीं like अमिताभ बच्चन movies, या भाई मिलते हैं प्यार से और business भी करते हैं. So, since the venue is moved to the ITPO Delhi, there's a huge enthusiasm among all the entire plastic industry, and they're really looking forward for this mammoth event. Mandavya ji, your achievement for vaccinating India is incredible. We have actually vaccinated a country a day. And I think this is possible only because of your perseverance and planning. So we at Plastindia are hoping you will guide us, mentor us, and support us in our endeavor to make Plastindia one of the finest exhibitions in the world. Having said that, welcome once again to all of you. And I also expect a lot of support from the entire team DCPA and ITPO. So thank you so much once again. Please enjoy the evening. Jai Hind. We are privileged to have Shri Ajay Shah ji, the President of Polymers at Reliance Industries Limited. He's on board with Plastindia's NEC as the chairman. I request Shri Ajay Shah to give us insights of Plastindia 23. Thank you, Sarika. Respected Shri Honorable Minister Shri Mansukh Mandavia ji, Shri Bhagwat Khuba ji, Shrimati Aarti Ahuja ji, Shri Bimal Dubey, my fellow members at Plastindia, the industry's stalwarts, colleagues and friends, a very good evening and a warm welcome to Plastindia 2023 launch event. As we embark on the rescheduled 11th edition of Plastindia to be held at the modernized Pragati Maidan from 1st to 5th February 2023, we are encouraged by the sustained industry growth over the past 3 years. And this has been buoyed by significantly improved COVID situations in most countries across the globe. I would not dwell on the details of the new state-of-the-art exhibition venue, which will be shared by Shri Dubey later, but a few key elements of the forthcoming exhibition are: Plastindia 2023 is supported by the Government of India through our ministry DCPC, and I'm very thankful for that. This event should be the biggest in terms of space and exhibitors compared to all previous editions of Plastindia. It is expected to cover 1.5 lakh meters square of space. It would have nearly 2,000 exhibitors from 50 different countries across the globe. It would also attract a large number of policymakers, both from the domestic and international arena. This will cover also the who's who of the plastic industry. Despite the size and numbers, we assure you that we will follow all health and safety protocols that are required. It would probably be the grandest show at Pragati Maidan to be held till that date. It envisages to showcase India to the world of petrochemicals, plastic machinery, and all related sectors. It would also provide a huge opportunity for buyers and sellers to interact in the RBSM that is being proposed.
Plastindia 2023 would provide learning opportunities in conferences and talks to be conducted with renowned and eminent speakers from across the world. It would also further the cause of relevant programs of the government like Atmanirbhar Bharat, Make in India, Zero Effect and Zero Defect, being vocal for local, and all the other initiatives. I must reiterate that despite the shrinkage in the Indian economy due to COVID, the plastic industry showed remarkable resilience. In fact, the polyolefins industry grew even in the adverse conditions, reflecting the true utility of the material in the pandemic. And we, as an industry, can proudly say that plastics in medical and healthcare, together with the convenience in packaging, has helped us navigate this crisis better. Employment has been and will be a major concern in the post-COVID period. It is imperative that reskilling and employment are addressed and tackled to ensure sustained growth in the exhibition the exhibition would provide opportunities on this front. Further, with growth, polymer value chain continues to widen its employment base, providing ever-increasing opportunities to technically and scientifically skilled labor as well as unskilled labor. The Plastindia 2023 theme of Innovate, Sustain, and Grow. The exhibition will provide opportunities for all to learn about the latest trends in the sectors of industries, including the traditional sectors of raw materials, processing machinery, molds and dyes, auxiliary equipments, printing and packaging. Further, innovative industry trends in solar and renewable energy, agriculture, automotive, medical and healthcare, e-commerce, 3D printing, and digitization would be showcased together with how artificial intelligence and robotics can be used for efficiency and improved precision in the industry. Another major focus would be sustainability, circularity, recycling, and biodegradable plastics, providing growth opportunities in recycled products. Over the years, plastic industry has reinvented itself with advanced innovations and developed environment-friendly processing and utilization techniques. With the launch of Plastindia 2023, the foundation shared 10 goals to significantly contribute to the plastic industries. I'll just mention a few key among them. Making India the #1 destination for manufacturing plastics. Facilitating the growth of the Indian plastic industry. Creating employment opportunities to empower the economy for the country. Make India a global sourcing hub for plastics to encourage new and innovative techniques, showcasing the opportunities the global entities can tap in India and act as a catalyst for growth of the plastic industry and the sectors interconnected with plastics. The plastic industry represents excellent opportunities for processing machinery, tools, plastic products, supplies of plastic waste, and recycling equipment. Artificial intelligence and robotics. Our aim is to foster the growth of the Indian plastic industry by holding world-class exhibitions to offer platforms for brands to launch new products, grow their network, learn new technologies, and exchange ideas at a global level. Plastindia 2023 aims at not only bringing together exhibitors and visitors from different sectors of the plastic industry, but also displaying new technologies and innovations in the industry.
the great medium to showcase new products and brilliant opportunity to connect with national and international decision makers. As we embark on sustained growth backed by innovation in the entire plastic value chain to catapult it into an eminent position it deserves in the global industry. We welcome you to a world-class exhibition providing immense value to our exhibitors and visitors. Hence, I personally look forward to welcoming you all together with your business associates to an event to remember at Plastindia 2023 during 1st to 5th February at Pragati Maidan, New Delhi, so that we can together shape tomorrow. Thank you. Now it is time to unveil the brochure of Plastindia 23. I request the dignitaries on the dais to do the honors. I now invite Shri Bimal Kumar Dubeji, IAS of 2008 UP Cadre, to address the audience. He is the General Manager of ITPO, which owns the landmark exhibition and convention venue of Pragati Maidan in New Delhi. His support to expedite the ongoing revamping work at Pragati Maidan for Plastindia Foundation is highly appreciated. He is a firm believer that technology can bring transparency and efficiency. So, can we have you here, sir? Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical Fertilizers, Honorable Union Minister of State for Chemicals and Fertilizers and Ministry of New and Renewable Energy, respected Secretary Chemicals and Fertilizer Ma'am, Shri Ajay Shah, the Chairman of the Plastic India Foundation, Mr. Jigish Doshi, the President of Plastic India Foundation, other respected dignitaries on the dais, and the distinguished gathering. I congratulate Plastic India Foundation on this launching event for the Plastindia 2023, and I thank them to giving me the opportunity to address you all. As I could understand from their portfolio, the Plastic India Foundation has made its long journey starting in 1990 with few participants of say around 600 people. Today, the Plastic India Foundation has grown leaps and bounds, and as Mr. Shah has just mentioned, that in this edition of 2023, we are going to have a participation of more than 50 foreign countries. It is a big achievement for the organization, and I really congratulate everybody in Plastic India who is heading this organization. ITPO really looks forward for Plastindia 2023 at our venue. We are so happy to be getting associated with Plastindia Foundation, and we assure you, and we are in regular touch with you also, that we will make all possible arrangements to make this event most memorable ever in the history.
It's because the revamped ITPO represents the vision of Honorable Prime Minister. It will be a landmark for New India, and ITPO is coming up as the world-class venue with world-class infrastructure, state-of-the-art technology, our air-conditioned exhibition halls. All these things have been looked by the Plastindia Foundation members, and they have regularly in touch with our CMD also, and I assure you from this stage that our CMD is monitoring it very closely. And again, in no other uncertain terms, we look forward for your collaboration as the Plastindia stands for making the world-class B2B exhibition. I assure you that ITPO will also not leave any stone unturned to make your event more and more successful. Thank you so much. We are privileged to have Sri Jagdish Doshi ji as the president of Plastindia Foundation. He is the CMD of Vishakha Group. I request Sri Jagdish Doshi ji to address the August gathering. Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizer, Dr. Mansukh Bhai Mandavia ji, Honorable Union Minister of State, Chemical and Fertilizer and MNRE, Sri Bhagwant Bhai Khuba ji, Srimati Aarti Ahuja ji, Secretary to the Government of India DCPC, and friends from the industry, guests and fellow colleagues. Sir, I know you are getting so much late. So मैं अभी ये स्पीच नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मेन की पॉइंट है वो आपको बताना चाहता हूँ कि इन द कोविड टाइम ऑल्सो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इज ग्रोइंग वेरी गुड एंड इट्स अ बूमिंग. सो प्लास्टिक का ग्रोथ कभी भी अटका नहीं है. So it is growing at the approximately average more than 10%. So that is a plus point of the COVID plastic industries. Also in the COVID time, the increased use of the mask, PPE kits and rise in the online shopping and packaging, उसने भी बहुत बड़ा support किया है plastic industries को. Sir, in the year 2021, the consumption of plastics was at approximately 25 million metric ton. जो 1990 में खाली 0.9 मिलियन मैट्रिक टन था. अभी हम लोग 25 मिलियन मैट्रिक टन पे हैं और इन 2025 इट विल बी रीच एक्सपेक्टेड टू 30 मिलियन मैट्रिक टन एंड इन 2040 सर 50 मिलियन मैट्रिक टन पॉलीमर का कंजम्पशन इंडिया में होने वाला है. हमारा जो एक्सपोर्ट है सर वो 2025 में आज जो एग्जिस्टिंग है उससे करीब डबल होने का पूरा एक्सपेक्टेशन है एंड वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. हमें सर खाली आपसे सपोर्ट क्या चाहिए कि जो नेबरिंग कंट्री है जिससे हमें कॉम्पीट करना है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो नेबरिंग कंट्री उसके प्रोसेसिंग यूनिट को जो सपोर्ट दे रही है वो खाली नॉर्मल हमें सपोर्ट चाहिए, लाइक एक्सपोर्ट इंसेंटिव, न्यू कोई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव है जो इंडिया में नहीं बन रहा है और नया प्रोडक्ट कुछ लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ सपोर्ट, कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी विद द रीजनेबल प्राइस, ऐसे छोटे मोटे जो सर्टन सपोर्ट है वो आपसे चाहिए. तो हम जो प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सर प्लास्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट आर वेरी मच रेडी. हमारे लोगों में वो डेयरिंग है, हम लोग वो करने के लिए रेडी हैं. खाली हमें थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिल गया तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री जी का विज़न को हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे होके उनको पूरा सपोर्ट करके वो विज़न को हो सकता है कि जो अभी पेपर बोल रहा है कि 1 साल डिले होगा उसकी जगह 1 साल जल्दी करने के लिए वी आर रेडी. सो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑलवेज विद द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल. तो हमें ये जो है खाली थोड़ा बहुत हो गया तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए वी आर सपोर्टिंग द प्रधानमंत्री विज़न एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग हियर. खुबा जी, मनसुख भाई जी, थैंक यू वेरी मच. एंड सर जो अपना प्लास्ट इंडिया 2023 1 to 5 फरवरी है उसके लिए भी अभी से हम आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं. प्लीज़ ब्लॉक योर डेट
और आपके वहाँ मतलब जो है इनोग्रेशन और वो सब फंक्शन में आपकी हमें खास ज़रूरत है. सो प्लीज़ ब्लॉक द डेट. थैंक यू वेरी मच. Okay, thank you. Now I invite the Secretary in Department of Chemicals and Petrochemicals, Srimati Aarti Ahuja ji, to share her views. Ms. Aarti Ahuja ji, she joined Indian Administrative Service in 1990. Currently posted as the Secretary in Department of Chemicals and Petrochemicals, she was the Additional Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare. With a strong academic background, she has written many articles for various journals, despite being very busy with her career spanning over 30 years in the social sectors, including health and nutrition, not just in the state and central government of India, but internationally as well. May I have you? Thank you for that introduction. Honorable Minister, sir, Honorable MOS, sir, all the colleagues on the dais and in the audience, thank you so much for this opportunity to speak to you. In fact, I'm really impressed by the theme you have chosen. Together, we shape tomorrow. What a lovely theme it is, because I think if COVID has taught us anything, it is that we need to work together. And unless we work together, we will not be able to shape the tomorrow of our country. So compliments on choosing this theme. Now coming to the sub-themes that you have. Already we heard that we are growing at a CAGR of 10%, 11%. Growth is happening. But growth without innovation and without sustainability is not going to lead us to further growth. And the exhibition that you are going to organize, which is being launched today and where 50+ countries are going to attend, is going to be just one step in that direction. You are going to, all of us are going to learn about new innovation. We are going to learn about sustainability, about how to make our processes and our systems more sustainable, more in sync with the global realities and with the legal provisions within our country. We are going to learn that. But this will be a great stepping stone, but it is a stepping stone. And beyond the stepping stone, also we need to work together and we need to think. A couple of things, and I will just keep on this and I'll keep myself very short. A couple of things on this, on innovate, sustain, and grow. So, a few points. One thing that I have realized after coming here is that probably we do not collaborate enough on many issues. One of those is, of course, the R&D, about not only creating new technology, but also disseminating that. And I understand that it's a question of commercial interests as well. However, we also need to be open to the idea of dissemination of technology, dissemination of new products, and we welcome you to collaborate with the department and with others. In fact, this morning, Honorable Minister took a meeting with the major oil producing companies and with the Department of Science and Technology on how we can look at providing more locally made in India raw material and feedstock for the downstream industries like the plastic industry. So that is something which is going to happen and for which we need your inputs. So that was point one, that we need to collaborate more on R&D, on innovation, on new technology, and on new products. The second issue, of course, is of sustainability. And today, sustainability is not just about processes. Of course, it is about processes, but it is processes plus. And the plus comes from use of technology, use of, you mentioned about AI, about robotics. And India has such a core strength in all these things.
That is something that we should be tapping for this industry so that tomorrow we should be world leaders in development of new technology, new products, adding value to them, making them sustainable, so that the taint that is there with the plastics industry in people's minds is removed. So that is another thing that we need to do. The next point I'd like to submit before you is that in terms of collaboration is that there are a lot of startups in our country. A lot of them want to come up with new products, with new technology. Can we think of a mechanism by which the established industry leaders help those startups? I request you to think about it and maybe come out with a solution, and we can work together on that. Can we do that? Can we do some kind of an institutional support system for the existing MSMEs also in different things? The next thing, and I'm sure the exhibition is going to help us in that quite a lot, is innovation in high-value plastics. Not just the mass consumption, which is also required, but where the strategic interests of our country lie. So the high-value, high strategic interest plastics, let us also start looking at that. Let's see what is required for that, and whatever is required, let's identify those doables and let's move together. We are there for you. Now, lastly, I would just like to emphasize that, again, learning from COVID, it's been an all-of-society approach. Everybody came together, and India told the world that we can do it. We didn't have anybody doing PPE, and then now we are exporting that. We are exporting masks. We didn't have a single manufacturer. No ventilators were being manufactured in India, and today we are exporting them. So India can do it. And let's show that in the specialty chemicals, in the plastics industry, we can be the world leaders. We need to come together. We need to ensure that whatever needs to be done should be done. From the government side, I exhort you and I request you that we have the PCPIR investment regions which have been notified. Please come and populate those. They offer very good incentives. There are the plastic parks, which have been set up as clusters for the plastic industry. Please tell your units to go and see them, see the facilities that are on offer there, and go ahead, and the infrastructure is ready in most of those places. Partner with CIPET for getting trained manpower. They have such excellent courses, a great name, very good students coming out. Partner with them. Similarly, there is we have the centers of excellence that we support, which are basically national institutions or chemical engineering departments, etc. Tell us your requirements. Tell us what you need to be developed. Tell us what kind of support you need, and we'll take it up through the centers of excellence. We also have the plastic waste management parks, which CIPET is running. DG CIPET is here. You can also discuss with him later on how you can collaborate with CIPET on that. So these were a few points that I wanted to make, but let me assure you that the department is with you. We are all part of the same team, and whatever support you need, we are always there to help you under the guidance of Honorable Minister and Honorable MOS. We are there with you. Thank you so much. Thank you, ma'am. We appreciate your understanding and support to resolve the issues of this industry. I now invite Honorable Minister of State, Shri Bhagwant Khubaji, to share his views. Shri Bhagwant Khubaji is the Honorable Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and Ministry of New and Renewable Energy. Shri Khubaji, a mechanical engineer, was elected from Bidar constituency in Karnataka. By profession, he is an agriculturist and a social worker. Plastindia 2023 इस उद्घाटन के उद्घाटक डॉक्टर मनसुख मांडविया जी,
मंच पर उपस्थित अजय झा जी, बिमल दुबे जी, जिग्नेश दोषी जी, श्रीमती आरती जी, जयेश रंभिया जी, अशोक गोयल जी और विशेष करके इस कार्यक्रम में उपस्थित प्लास्टिक जगत के सभी मान्यवर और मीडिया मित्रों, 2-4 मीटिंगों में मैंने जब भी बात करता था तो हमारे बड़े मंत्री जी डॉक्टर मनसुख भाई मांडवी जी कहते थे कि प्लास्टिक नींद से आंख खुलते ही प्लास्टिक का उपयोगिता प्रारंभ होती है दिन का, और रात होने के तक भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोगिता हमारा जीवन में निरंतर रहता है। तो आज इस सभागृह में उपस्थित आमंत्रित का संख्या यदि अगर हम देखा गया कि प्लास्टिक सेक्टर कितना बड़ा है देश के अंदर, इस पर पता चल जाता है। तो प्लास्टिक देश के अंदर जरूरी भी है और देश इसके अंदर बहुत काम भी कर रहा है। करीब 2000 एक्सपोर्टर्स की भारत में संख्या है, करीब 4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट देती है, करीब 30,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसमें लगभग एमएसएमई सेक्टर करीब 85% से ज़्यादा देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर इस सेक्टर के अंदर काम कर रही है। करीब 22 मिलियन टन की खपत देश के अंदर प्लास्टिक का आज है, और इसका ग्रोथ हमें देखा गया अगर 2021 और 22 की कमित कमी हमारा अनुमान 30% की ग्रोथ इस साल प्लास्टिक सेक्टर के अंदर हमें दिख रहा है। प्लास्टिक देश के अंदर बनती भी है और एक्सपोर्ट भी करती है और कुछ इंपोर्ट भी करती है। तो आज सुबह ही बड़े मंत्री जी के मीटिंग में इसको कैसे हम भारत के अंदर इंपोर्ट का निर्भरता कम हो, इसके ऊपर आज उन्होंने मीटिंग लिया था। तो इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में खुशखबरी देने जैसा माननीय मंत्री जी उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। आज प्लास्टिक के अंदर जितना हम फर्स्ट टाइम प्लास्टिक बनाते हैं, इसके साथ साथ भी रिसाइकलेबल प्लास्टिक का ग्रोथ करीब 54 बिलियन $, की आज भारत के अंदर उसका भी इतना पोटेंशियल है, और उसका ग्रोथ करीब 6.5% की ग्रोथ रिसाइकलेबल। वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ में पिछला 10 महीने से 2-4 एसोसिएशन वाले कभी कभी पूछते रहते मुझे कि प्लास्टिक का फ्यूचर कैसा होगा। सिंगल यूज का प्लास्टिक के बारे में उन्होंने जिक्र करके ये बात मुझे कहते थे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का कंजम्पशन के बराबर में यदि अगर हम अदर प्रोडक्ट्स का हम देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी नेग्लिजिबल। और यही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के अगर हम लोग इधर अटक गए तो जो ग्रोथ की संभावना है, इन्वेस्टमेंट की जो संभावना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो धैर्य चाहिए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा
स्लो हो जाती है। तो अभी भी मैं इधर मनसुख जी आने से पहले मैं बात करते बैठा तो उन्होंने भी यही जिक्र निकला। तो प्लास्टिक को रिप्लेस करने जैसा और कोई आज तक तो मटेरियल है ही नहीं है। और प्लास्टिक आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगा, हेल्थ सेक्टर का इंडस्ट्री होगा, अनेक क्षेत्रों के अंदर उसको जरूरत पूरे करने के लिए प्लास्टिक तो जरूरी है। तो देश के अंदर प्लास्टिक बहुत बड़ा मार्केट भी है और आने वाला दिनों में भारत एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रख करके इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन और हमारा मंत्रालय की सीपेट लगातार इनोवेशन करती है और आपको सहायता करती है। आज देश के अंदर करीब 10 प्लास्टिक पार्क का भारत सरकार की उसको अनुमति भी दी है। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर करके तो इंडस्ट्री को सहायता करने के दिशा में भारत सरकार कदम उठा रही है। इसके साथ में सेटिंग अप प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लगातार इंडस्ट्री को, इनोवेशन को और सरकार के साथ में जुड़ के इसको काम करने के लिए भी ये काउंसिल निर्माता किया है। तो यही आज का मुझे आमंत्रित करके आपने जो मान सम्मान दिया है, यही 2 बातों के साथ मेरा 2 बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं। Thank you, sir, for being a guardian to Plastindia Foundation with keenness to resolve the issues of plastic industry. Now it is my privilege to invite our chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, who is the Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers. As the Health Minister, he played a crucial role in augmenting the vaccine manufacturing capacity of the country and boosting the COVID-19 vaccination drive. For his efforts in strengthening India's fight against the pandemic and improving the overall healthcare system, Indian Express placed him at number 25 in its list of 100 most powerful Indians in 2022. Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji represented India at G20 Health Ministers meeting in Italy in 2021. He also visited the Indian Pavilion at Expo 2020 in Dubai and invited global investors to invest in India and strengthen the vision of Make in India. As I request him to address and bless us with his guidance and kind support for the growth of this sector and success of Plastindia 23, he deserves a standing ovation for his exemplary contribution to the health and safety for all of us. प्लास्ट इंडिया 2023 के लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने फिगर फैक्ट के साथ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के सिनारियो के बारे में बात कही, ऐसे मेरे साथी मंत्री भगवंत खुबा जी, हमारे विभाग के सेक्रेटरी आरती आहूजा जी, हमारे मित्र भाई श्री जिग्नेश भाई दोषी, अजय भाई शाह, बिमल भाई दुबे, जयेश भाई रामबिया जी, अशोक गोयल जी, सभी इंडस्ट्रीज से आए हुए भाइयों बहनों, जैसा यहाँ बताया गया, अभी तक नहीं हुआ है इतना सबसे बड़ा 2023 प्लास्ट इंडिया को ऑर्गेनाइज करने हम जा रहे हैं। इस टाइप के कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए होती है, इस इंडिया प्लास्ट के माध्यम से नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड
जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के प्लेयर यहाँ आएंगे। बेस्ट टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। आपका संपर्क आपकी डाउनस्ट्रीम, आपकी अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के साथ होगा, जो आपकी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में उपयोगी भी होगा। और इसलिए देश में और दुनिया में इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के प्रोग्राम्स, इस टाइप के कार्यक्रम कंटिन्यूस होते रहते हैं। कभी हमारे यहाँ होता है तो दुनिया इंडिया में आती है, और दुनिया में कोई जगह पे होता है तो हम वहाँ जाते हैं। लेकिन ये लर्निंग होती है, एक सीखना होता है। सीख के, समझ के आगे हम उसमें से कुछ न कुछ करते हैं। उसमें हमारा व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, सेल्फ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट भी होता है, और उसके साथ देश की इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ती है। इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व होता है। और जब यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं, तब हमारे जिग्नेश भाई कह रहे थे कि थोड़ा कुछ मदद मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी सरकार, मोदी गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम मानते हैं, जानते और समझते भी है कि कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो उसकी प्राथमिकता होती है अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना। ये नहीं केवल हम कहते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक अच्छी बात कही थी कि कोई देश आगे बढ़ना चाहते, कोई राज्य आगे बढ़ना चाहते तो उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो ये दार्शनिक व्यक्ति ने कहा था कि देश को आगे बढ़ने के लिए अपने राज्य में रहने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना चाहिए। यानी कि राज्य में जो महाजन रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे कारोबारी लोग हैं, उसको मदद करना चाहिए। और सेकंड सेंटेंस में चाणक्य ने कहा था क्यों मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये वेल्थ क्रिएटर होते हैं, इस संपत्ति का सर्जक होते हैं। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, मैं एक बेस्ट ट्रेडर्स भी हूँ। ये हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। और इसलिए इट्स वन टाइप ऑफ स्किल, जिसमें बिजनेस करने की स्किल है, इंडस्ट्रीज चलाने की स्किल है, उसको प्रोत्साहित करने से संपत्ति का सर्जन होता है। तब जो संपत्ति का सर्जन करता है वो देश की तिजोरी में पैसा देता है। तब जाके चाणक्य ने आगे कहा कि राज्य गरीब और किसानों का कल्याण कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने 4 सेंटेंस में कही। तब भी 2000 साल पहले भी गरीब से टैक्स नहीं लिया जाता था, उसको देना होता था। किसान से टैक्स नहीं लिया जाता था, उसको देना जाता था। लेकिन अब कब उसका कल्याण कर पाएंगे, तो जब सरकार की तिजोरी में पैसा आएंगे। तो सरकार की तिजोरी में पैसा कौन डालेंगे, तो वेल्थ क्रिएटर डालेंगे, महाजन डालेंगे। इसलिए हम जानते हैं, समझते हैं कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन नेशन बिल्डिंग के लिए आवश्यक होता है। और इसलिए नॉट ओनली फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बट ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा हूँ, वहाँ फार्मा इंडस्ट्रीज है, केमिकल्स इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले PLI स्कीम फार्मा इंडस्ट्रीज में मैं लेके आया था, मकसद यही था। मोदी जी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर यानी कि उसकी डिफिनेशन केवल इतनी नहीं है कि हम सारी चीज इंडिया में ही बना लें। ग्लोबलाइजेशन का समय है, हमें कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो मिनिमम हमारी जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है वो तो इंडिया में बननी ही बननी चाहिए। ये उद्देश्य से 53 API आइडेंटिफाई किया था। वो 53 API 80-85% एवं हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, और उसको इंडिया में बनाने की आवश्यकता थी। केवल अभी 1.5 साल हुई है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि
PLI 1 और PLI 2 दोनों स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। 70% मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही है। हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना भी है, एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना भी है। और इसलिए सरकार का रोड मैप क्या है? जब आप यहाँ कारोबारी लोग इकट्ठे हुए हैं तो हम कौन से रोड मैप पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस रोड मैप के आधार पर आप अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सको? उसके लिए क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आपको इन्वेस्ट करना है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, तो आपको गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टि से देखना होता है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना होता है। देश की पेट्रोकेमिकल्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेसिक मटेरियल क्रूड होता है, तो क्रूड को रिफाइन करने के लिए क्रैकर चाहिए। क्रैकर से निकल रही सारी प्रोडक्ट को डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप करने के लिए आपको PCPIR चाहिए। PCPIR में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज भी आए, MSME भी आए, सब लोग उसमें से अपने जो चाहिए वो चीजों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कलेक्ट करके वो अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करें। जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं तो हमें इक्विपमेंट चाहिए। हमारे पास 2 चीज है और 3 चीज नहीं है तो आत्मनिर्भरता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप होलिस्टिक अप्रोच से सोचेंगे, या हमारे खुबा जी उल्लेख कर रहा था कि सुबह में मंत्री जी एक मीटिंग कर रहे थे, मैं सभी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के साथ बैठा था। हमारे प्रभदास जी यहाँ बैठे हुए वो सुबह में मीटिंग में था। तब जाके बात निकली कि मैंने API में तो PLI स्कीम दिया, मैं केमिकल्स में भी PLI देना चाहता हूं, लेकिन एग्रो केमिकल्स हो, की स्टार्टिंग मटेरियल हो, इंटरमीडिएट हो, फार्मा के लिए और अदर इंडस्ट्रीज के लिए, उसका बेसिक मटेरियल क्या है, बेसिक केमिकल्स क्या है? तो उसमें से 80% बेसिक केमिकल्स, बेसिक मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज से निकलता है। तो क्यों हम बेसिक मटेरियल पर PLI लाए? तो उसमें से पेट्रोकेमिकल, उसमें से एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी, उसमें से API इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी, उसमें से फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी। बेसिक चीजों को पकड़ के, और दूसरा ये इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सरल है भाई, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज है, तो वही हम उसको टास्क दे, भाई क्या दिक्कत है? जब हम रोड मैप बनाते हैं तब किसके लिए बना रहे हैं? इंडस्ट्रीज के लिए। हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है? तो कि देश में इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करना। तो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो हमें पूछना होगा किसको? मैं और मेरे 4 ऑफिसर बैठ जाए और यहां पॉलिसी बना दे, ये तो देश का इतिहास रहा है, यही हुआ है भाई। मुझे ये नहीं करना है। मैंने सुबह में कहा कि भाई इंडस्ट्रीज मुझे कैलकुलेट करके बताए कि मेरी रिक्वायरमेंट, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं सरकार हूं, मैं देश हूं, मेरी देश की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे बेसिक मटेरियल यहां बनाना है, बेसिक केमिकल्स बनाना है, बोलो मैं क्या मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक टास्क फोर्स बना लेते हैं। किसने कहा? इंडस्ट्रीज ने कहा कि हम एक टास्क फोर्स बना लेते हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये करना है तो हमें क्या चाहिए। आपको पॉलिसी रिफॉर्म चाहिए, वी आर रेडी सपोर्ट टू यू। आपको PLI स्कीम चाहिए, वी आर रेडी सपोर्ट टू यू। वैसी ही तरह से मैं जिग्नेश भाई को बता रहा था, मेरे बगल में बैठे बैठे बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि आप एक ग्रुप बनाओ 4-5-6 लोगों का, जरूरी हो तो मैं मेरा एक ऑफिसर आपको दे दूंगा। आप 10-15 दिन में एक बार बैठो, 10-15 दिन में एक बार बैठ के आपका रोड मैप तैयार करो कि क्या मदद चाहिए, किस टाइप की मदद चाहिए। आपने बोल दिया कि हमें यहां इस टाइप की इंसेंटिव दो, कैसे देना, किस तरह से देना, हमारी यह जिम्मेवारी है कि मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। मैं कितना भी यहां भाषण दूं, लेकिन मैं आपको यहां अच्छी बात हुई कि अड़ोस पड़ोस के देश में, नॉट ओनली फॉर नेबरिंग कंट्री,
मैं तो चाहता हूं कि वर्ल्ड के साथ हम कंपटीशन कर पाएंगे क्या? मुझे मेरे देश की इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव बनाना है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए 10 बिंदु आइडेंटिफाई करके हमें दे सकते हैं क्या आप? जो आपकी ओर से 10 पॉइंट आएंगे कि ये करने से आपका हम वर्ल्ड के साथ कंपटीशन में टिक जाएंगे। हम ये करने के लिए तैयार हैं, हम ये करेंगे। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपकी दूसरी डिमांड, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच है कि हम कोई पॉलिसी फॉर्म करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी तय करेंगे। जिस पॉलिसी को देख के आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तब आपको पता हो कि इतने समय में हमारा रिइंबर्समेंट हो जाएगा, हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज का जो खर्च है वो उसमें से पास हो जाएंगे। मिनिमम ये समय के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट एश्योरेंस होना ही चाहिए, एश्योरिटी होनी ही चाहिए। इस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए हमने सार्वजनिक सेक्टर में, नॉट ओनली फॉर आवर मिनिस्ट्री बट इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू आवर गवर्नमेंट। सेकंड, हम डेवलपमेंट में भागीदारी कर सकते हैं क्या? एक सीपेट का यहां एग्जांपल दिया गया। सीपेट एक भारत सरकार की इंस्टीट्यूट है। मैंने 3-4 साल से उसको इस तरह से डेवलप किया। मैंने कहा भी क्या ये सब इंस्टीट्यूट सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकती? क्या गवर्नमेंट उसको पैसा दे और ये अपनी सैलरी दे दे, वहाँ जो फैकल्टीज है उसको पढ़ा दे और ट्रेनिंग दे दे और चले जाए लोग? मैंने कहा मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। इंडस्ट्रीज के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज लिंकेज होना चाहिए। और ये लिंकेज करने के लिए आपको सामने से सीपेट को अप्रोच करना है, इंडस्ट्रीज को। मैं समझता हूं कि एमएसएमई है, छोटी इंडस्ट्रीज है, उसको कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई रिसर्च करवाना है, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जाके सीपेट को प्रोजेक्ट देके आए कि आप मुझे प्रोजेक्ट करके दो, आप मुझे रिसर्च करके दो, आप मुझे सॉल्यूशन दो, तो सीपेट आपको सॉल्यूशन देंगे। और इसलिए सीपेट को भी सपोर्ट मिले, आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसमें दोनों की भागीदारी हो जाए। मैंने उसके इसलिए ऐसे रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आईसीएमआर में एक रिसर्च पॉलिसी मैंने डिक्लेयर की, फार्मा में एक रिसर्च पॉलिसी डिक्लेयर की। वैसी रिसर्च पॉलिसी जो रिसर्चर है, मैं जानता हूं कि कोई रिसर्चर, कोई आप जब कोई रिसर्च करने के लिए आपके लैब में निकलेंगे तो सब रिसर्च आपका सक्सेस ही होगा, ऐसा नहीं होता है। अब 10 लोग ट्राई करते हैं, उसमें एक व्यक्ति सफल हो जाते हैं, तब तक आपका इन्वेस्ट होता है, आपका खर्च होता है। एकेडेमिया, इंडस्ट्रीज को लिंकेज करके ऐसी कौन सी रिसर्च पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें भारत सरकार आपको सपोर्ट करे? क्या एक ऐसा ग्रुप इंडस्ट्रीज की ओर से ना बने, 4-5 लोगों की टीम बने, वो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठे, अलग अलग इस टाइप की रिसर्च पॉलिसी का स्टडी करे? ऐसी एक रिसर्च पॉलिसी हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में क्यों ना हो? मेरी अपेक्षा है कि ये दिशा में भी हम काम करें। मैं मानता हूँ, मोदी जी बार बार कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट का ये अप्रोच है, कंप्लायंस बर्डन हम कैसे ख़त्म करें, सेल्फ सर्टिफिकेशन पर हम कैसे जाएं। हम हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट पर भरोसा करना चाहते हैं। सारे चीज़ में क्रिमिनल केस हो जाए, थोड़ी सी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन का इश्यू होता है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ऐसी टेक्नोलॉजी रिसर्च में हम कैसे जोर दें। और जब हम ऐसी इंडस्ट्री चलाते हैं उसमें कम से कम पोल्यूशन कैसे हो, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रूल्स रेगुलेशन क्या है, किस टाइप का रूल्स रेगुलेशन में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई ना कोई सॉल्यूशन आज के दिन में आवश्यक है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो आवश्यक है ही। तो कैसा सिंगल यूज प्लास्टिक होना चाहिए? ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके पर भी हमें काम करके गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। आज तक यही चला है कि यहां से बोले और वहां से सुने। ये मोदी गवर्नमेंट है भाई, ये बदला हुआ भारत है। आप बोलो और हमें सुनना है और हमें करना है। बोलना आपको है, बताना आपको, हमें कहना है कि भाई सरकार को ये करने की आवश्यकता है, जरा करिए। और ये करने के लिए और करवाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। हमें सिस्टम क्रिएट करनी है। मैंने जो पहले कहा ना कि इस टाइप का कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म इसलिए आवश्यक होता है कि ये प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने आया हूं। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए तो कोई मेरे बगल में बैठे, आप आपस में बैठे, उसमें चर्चा होगी। मैं 2 विषय, आप 3-4 विषय आपके सामने रख के जाऊंगा, तो उसके पर भी आप बातचीत करके अपनी कार्य योजना बनाएंगे। ये सब इस टाइप के कार्यक्रम में हमें अवसर प्राप्त होता है। और मैं मानता हूं कि प्लास्ट इंडिया 2023 वो इस तरह का हो जिसमें देश आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मना रहा है, तब मोदी जी ने एक बात कही है। अब बहुत सुना है भाई, हम कार्यक्रम करते हैं, पॉलिसी निकालते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म, कल का सोचते हैं, हमने कभी परसों का सोचा ही नहीं। बाद में दुनिया के पीछे भागने का हमारा अवसर होता है। क्या देश में हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का 25 साल का रोड मैप हम तय कर सकते हैं क्या? 25 साल में हमारे इंडस्ट्रीज को हमें कहां ले जाना है? कौन सी टेक्नोलॉजी 25 साल में होगी जो इंडिया में ही बननी चाहिए? कौन सा हमारा पॉलिसी रिफॉर्म होना चाहिए? कौन सी इंडस्ट्रीज, किस टाइप का प्रोडक्शन, इसके लिए कौन सी इकोसिस्टम होनी चाहिए? पीसीपीआईआर के लिए मैंने आरती जी को कहा है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके आज जो पीसीपीआईआर है हम सक्सेस नहीं रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सरकार जो करती है वो सब ठीक ही हो गया, ऐसा यहां बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई। हमने किया, हम सक्सेस नहीं रहे हैं। हम आपको पूछते हैं कि पीसीपीआईआर में क्या करना चाहिए। उसके लिए भी एक टीम बने, टीम बना के हमें एडवाइस करे। मेरी अपेक्षा है आज के अवसर पर जो मैंने यहां बोला है, उसके अलावा भी आप स्वयं इंडस्ट्रीज हैं, आपको और मेरे से ज्यादा विशेष एक्सपीरियंस होगा। कई दिक्कतें आपने झेली होगी। छोटे छोटे ग्रुप बना के, जिसमें उसको, जिस लोगों को उसमें रुचि है, एक्सपर्ट लोग को उसमें शामिल करके एक बार वर्कआउट करके आओ। बाद में हम आपके साथ बैठते हैं और उसके आधार पर हमें 25 साल का, जब देश आजादी का 100 साल मना रहा हो, उस वक्त हिंदुस्तान की हमारी इंडस्ट्रीज किस टाइप की होनी चाहिए, ऐसा विजन तैयार करके एक ऐसा कार्यक्रम करें जिस कार्यक्रम में हम ये प्रेजेंटेशन को सारी दुनिया के सामने रखें कि इंडिया की आज के 25 साल के बाद हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, हमारी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज इस टाइप की होगी और हम यहाँ जाने के लिए रेडी है। उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, पाथवे कौन सा होना चाहिए, सारा विषय पर कंसल्टेशन करके हम आगे बढ़े, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सब लोगों को, मुझे लगता है कि कोविड क्राइसिस के बाद आप फिजिकली पहली बार मिले होंगे और ये पहली बार हुआ, मैंने देखा कि कई लोगों को खड़ा रहना पड़ा, बैठना का भी जगह नहीं मिली। इतनी संख्या में आप उपस्थित रहे हैं तो अवश्य इस कार्यक्रम का कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ फेलिसिटेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। So now we proceed with the felicitation ceremony with green certificates. The essence of these certificates being that 25 trees would be planted under their name at Bhilwara in Rajasthan. So I request our respected members to felicitate our special guests with the green certificates. Shri Jigish Doshi ji and Shri Ajay Shah to Honorable Mr. Dr. Mansukh Mandavia ji.
Shri Ashok Goyal ji to Honorable MOS, the Minister of State, Shri Bhagwan Kuba ji. Shri Jay Shrambia and Shri Prabdas to Secretary Ms. Aarti Ahuja ji. Shri Vikram Bhadoria ji to GM ITPO, Shri Bimal Kumar ji Dubey. Mr. M.S. Batush to Shri Anil Goyal of Shapurji Palanji. Shri Arvind Goenka ji to Ambassador and former Joint Secretary Commerce, Shri Amrendra Khatwa ji. Shri Surendra Chaudhary to Shri N.K. Santoshi ji. Thank you. Yeah. I request. Yeah. So I request our Honorable Minister to inaugurate the Plastindia 23 film. Countless innovations have supported the human race and have helped mankind to evolve to its current state of development. Plastics are an indispensable and enriching part of modern lifestyle, enabling us to lead a comfortable life. They are used in various industrial applications such as packaging, construction, textiles, electronics, healthcare, automobile, agriculture, defense equipment, and recently in 3D printing and robotics. India is one of the fastest growing global economies and has recorded 8.4% growth in GDP in the year 2020-2021. Indian plastics industry is making huge strides thanks to good investment climate, favorable government policies, cutting-edge R&D, a favorable demographics with a young workforce leading to growth in consumer and industrial demand. Since its invention in the early 1900s, plastics have transformed the world. Its diverse applications and unparalleled utility make plastics a great investment opportunity. Plastics impacts our life in every moment and makes our life enjoyable. Plastics have been a great savior in mankind's battle against COVID-19 and helped us develop PPE kits, face masks, syringes, and other medical products in the shortest possible time. India took a major initiative to become Atmanirbhar for tackling the pandemic, and now the economy has fully recovered with great growth prospects. The production and consumption of plastics has increased manifold in India. In 1990,
the consumption of plastics was merely 0.9 million metric ton. This has grown to 22 million metric ton in 2021-2022 and shall exponentially rise to 28 million metric tons by 2025. With the growing consumption, we also have the responsibility of waste generated. Government policies and industry efforts are working towards a sustainable growth for the industry. In 2018, the overall size of the Indian plastics industry was $73 billion, and this is expected to reach $102 billion by 2025. Plastindia is a triennial celebration of plastics, where thought leaders and industry partners congregate to envisage a beautiful future and build a better world for future generations. At Plastindia, global leaders of the plastic industry convene together and showcase the latest innovations in the world of plastics and expand their business alliances. With national progress through plastics in mind, Plastindia Foundation was established in 1987. It is the apex body of major associations, organizations, and institutions connected with plastics with common objectives. The foundation is committed to the nation's growth with the development of plastics sector. To achieve this goal, Plastindia Foundation has been organizing the Plastindia exhibition since 1990 and have successfully organized 10 editions, establishing itself as top plastics show of the world. The previous 2018 edition had 1,800 exhibitors from 44 countries with a visitor footfall of over 245,000 from 103 countries. 1,200 reverse buyer-seller meetings were held with overseas buyers and exhibitors, and the show generated approximately $120 million worth of business. The event was a mega success, and we are confident to outperform these numbers in 2023. The largest in India and the third largest plastics exhibition in the world is back in the nation's capital, New Delhi. The 11th Plastindia exhibition will be held from 1st to 5th February 2023. The newly revamped International Exhibition and Convention Center at Pragati Maidan is the home for Plastindia 2023. Plastindia 2023 is glad to have Reliance Industries Limited and Loya Corn as platinum sponsors, and Mamata Machinery, Supreme Industries, and HMEL as gold sponsors. The exhibition is supported by Department of Chemicals and Petrochemicals, Make in India, and Swachh Bharat. The Mega Exhibition Center, having more than 4 million square feet of built-up area, has state-of-the-art exhibition. So that was the launch promotion film for Plastindia 2023. Now I invite the Chairman of National Advisory Board of Plastindia Foundation, Shri Ashok Goyal, to share his vision about Plastindia 23. He is the Chairman of Ashok Goyal Trust and former MD of SL Propack, the largest laminated tube producer of the world. So. Thank you so much. आदरणीय व्यासपीठ, मैं शायद गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर के बोलने के बाद. I think it's only the word of thanks, I guess. But just very briefly, I thank you, sir, for coming and blessing us and also setting the roadmap for the industry. And I do wish Plastindia 2023 to be a huge success. Thank you very much. Jai Hind. I now invite Shri Anil Goyalji, Project Director at Shapurji Palanji, the contractors at ITPO, to assure the exhibitors for timely completion of the venue.
I'll not take much of a time. So there's a tagline which Shapuji believes in. Commitment is a commitment. So November 22 is the commitment to make that hall 6 ready, and it will be ready. Thank you. That sounded like a man of action and few words. I now request Sri Jayesh Ramia ji, the Treasurer of Plastindia Foundation, to give the vote of thanks. He is the former President of ITPO and MD of Prem Sons. Dignitaries on dais and industry friends. It's really pleasure to be amongst fraternity after a long time physically meeting everybody, and everybody is enjoying this brotherhood. और ये brotherhood का चमत्कार है मनसुख भाई कि Plastindia is world's largest trade show built out of people working on honorary basis. इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के द्वारा. बाकी के इससे जो बड़े 2 ट्रेड शो है दुनिया में वो कमर्शियल है. दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर इंडस्ट्री. और जैसे आरती आहूजा जी ने बताया कि माइक्रो इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमारी लेफ़्ट साइड, हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड होता है, और लेफ़्ट साइड एक वहाँ पर हमने पैनल लगाई है विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. 500 माइक्रो इंडस्ट्री को हम मात्र 18,000 रुपये में हम वहाँ एग्जीबिशन स्पेस दे रहे हैं, विच इज़ पीनट्स. मतलब जो सिर्फ इंडस्ट्री एग्जीबिशन विजिट करने की ख्वाहिश रखते थे, उनको हम एग्जिबिटर बनने का मौका दे रहे हैं. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग व्हाट प्लास्टिंडिया इज डूइंग. Thank you everybody, thank you for coming, thank you for making and supporting Plastindia so nice, so big and so great, so that India के लिए हम सबको मिलके कुछ कर सकें, देश को स्ट्रॉन्ग बना सके. ये भावना के साथ हमारी पूरी टीम इसमें काफ़ी मेहनत कर रही है. एंड वी आर लकी टू बी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. हमारे पहले जो टीमों ने काम किया और प्लास्टिंडिया को ये मकाम पे पहुंचाया, सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद. आप जो यहाँ पर अपना वक्त निकाल के आए, आप सबका धन्यवाद. हम काफ़ी रियली शुक्रगुजार हैं हमारे मनसुख भाई मांडविया जी के. आज उन्होंने जो हौसला अफजाई की कि हम सुनते हैं, आपको क्या चाहिए बताइए, हम सुनना चाहते हैं. सर, इट इज़ रियली हमारे कुछ सुनने वाले हैं, हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री हमारे साथ है, वो हमारे को जो बल देता है तो हमारा साहस बढ़ाता है. थैंक यू सो मच हमारा साहस बढ़ाने के लिए. खूबा जी, थैंक यू सो मच. आपने जो डिटेल में जो बताया कि प्लास्टिक सुबह से शाम तक उसके बिगड़ ज़िंदगी चल नहीं सकती, आपने रियलिटी सबके सामने लाया. थैंक यू सो मच. आरती जी ने बातों बातों में यहाँ पर आने से कि प्लास्टिक के अगेंस्ट जो भी लोगों की गलत फहमियाँ हैं, उसको पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री में रह चुकी है, तो उसकी हेल्प, उसके माध्यम से रिसर्च द्वारा ये हम साबित कर सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ नॉट सो बैड, प्लास्टिक इज़ गुड, इट इज़ सेफ मटेरियल टू यूज़. तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं एंड सबके शुक्रगुजार हैं हम यहाँ पर ये एग्जीबिशन के सक्सेस बनाने के लिए जो NEC टीम, जो हमारी मैनेजिंग कमेटी हमारे साथ है, जो अपने पर्सनल निजी लाइफ और बिजनेस से टाइम निकाल कर ये इसको मजबूत करने के लिए साथ काम कर रहे हैं, सबका खूब खूब धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अगर सर आप परमिट करें तो हमारी ये ऑनरी टीम वुड बी रियली हैप्पी इनके साथ एक ग्रुप फोटो के लिए. इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट. तो सारे NEC टीम मेंबर और मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ प्लास्टिंडिया प्लीज़ कम फॉरवर्ड क्विकली, बिकॉज इनकी और कोई एंगेजमेंट है, इनको जाना है. सो डोंट प्लीज़ कम क्विकली. लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो फॉर आवर मेमोरी. एंड आफ्टर दैट वी रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट डू जॉइन अस फॉर डिनर. थैंक यू सो मच. Thank you, Sarika ji, for wonderful program coordination. Let's give a clap for Sarika ji.